Okay, very good morning, all of you. Today we'll discuss about the exception chapter. Earlier in last lecture, we discussed about what kind of exception is, what is exception, what is the role of exception handling, and today we'll do the practical on exception handling. Before that, just we need to analyze what is exception and what is exception handling. See, if any error occurred during execution of program, it's called as an exception. Make a note of that. Few students are absent in last lecture, that's why I'm revising this session. What is exception? Any runtime error occurred, then it is called. So there are two types of exceptions: compile time exception and runtime exception. What is compile time exception? See, if a programmer or developer had a poor knowledge of language, and if he trying to write some illegal or wrongly syntax, then such a type of exception is nothing but compile time exception. For example, just I want to print something on display. So for that, just I am trying to write system dot out dot println round bracket. Just I will write double quote, and here I will type a message. Later on, I will use a semicolon. So this is the right syntax to display a message. Instead of that, if someone trying to write system dot pqr dot println, so it will not print a message because it is a compile time error. Okay, so such a type of errors causes uh, for the such a type of error causes due to lack of knowledge of any programming code or programming language. Okay, so this is a compile time exception. So what is the exception? If any runtime, what is a runtime? Runtime is nothing but at the time of execution, if any error occurred. Okay, at the time of execution. For example, I want to perform a division. So here I am trying to do num1 divided by num2. Okay, if I had value 10 by 2, it's working. If I had a value 30 by 2, it's working. If I had a value 44 by 12, it's working. But if I had value 12 by 0, we get the error. Okay. Compile time error nahi aayega. Okay. It will generate the error at the time of execution. So that's why here I wrote a definition. What is the exception? Make a note of that. Such a type of questions will ask in the interview. What is the exception? If any runtime error occurred, then it is called as an exception. Now, what is the exception handling? Most important thing, there is another question. What is the difference? Is there any difference between exception and exception handling? ये भी question पूछा जाएगा. So in that case, you need to specify the answer. There is a difference between exception and exception handling. See, what is the exception? Exception is used to exception is nothing but a runtime error occurred during the execution of program is called as an exception. And what is exception handling? Just I will write here. See, once error occurred, then it will generate the system error message. Okay, so first of all, before exception handling, we need to discuss some two things. What is a system error? Error handled by system. Any kind of error occurred, then it will handled by the system. Handle means what? Just it will display the message, which will not understandable by end user. Error message which will not understandable by end user. Make a note of that. Just for example, if I trying to divide any number divided by 0, so in that case system error will be generated. System error message will be generated that can't divide number by 0, like that, number divided by 0, or it will generate arithmetic exception. It will generate arithmetic exception, so end user will not understand. Okay, so make a note of that. System error message will not understandable by end user. So another type of message is user friendly message.
user. In that case, user, what is a user friendly message? System error averted. Friendly user message. That term called as a, or just we can say that user friendly message means system error will be converted into user friendly message, so and user can able to understand. Okay, so make a note of that, this system error and user friendly message. So what is exception handling? It's quite easy. Conversion of system error into error message into conversion of system error message into user friendly message is known as exception handling. Is known as exception handling. So we covered this point in last lecture, but just make a note of that. It's quite a revision, so you can able to understand. Now we need to do this code. Okay, so what kinds of options we have? Just look at that, and after that we'll start the practical. So just we had option of first to handle the exception. See, make a note of that. Exception will occur at any time. Okay, it will be at compile time, it will be at the execution time, but make a note of that. Once exception occurred, program will stuck. Whole program will not execute. Okay, make a note of that. So for that purpose, we need to handle that exception. Handle करना है मतलब क्या है कि कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए जहां भी टर्मिनेट हो रहा है या जहां भी स्टक हो रहा है, तो वहां से वो एंड होना चाहिए एंड एंड यूजर विल गेट अ प्रॉपर मैसेज कि क्या एरर है. So that term called as a exception handling. ये term होता है exception handling. So in that case, first of all, we'll do the program of try and catch. Later on, we'll do the program of finally. Later on, today we'll discuss about only try and catch. Tomorrow we'll discuss about the finally. Later on, we'll discuss about the throw class. So we'll discuss these points and later on we'll close the session. Okay. So first of all, let's start with the try catch. So before starting the actual implementation of try catch, just I want to show you how the error occurs and what is the process or how the program will start. Later on, just will first of all we'll clear about the exception. कि exception आने के बाद होता क्या है, how the program will start, and later on we'll handle the exception handling. Okay, so let's start with that, and here I will save my program, save in a Java folder, D drive Java folder, and my program name will be exception. Just I will write one dot Java, save it program, and just here I will write exception, my class name, and here I will define the class. Make a note of that. Today just we're starting this session with the help of try and catch. So before that, just we need to understand how the exception occurs. जैसे भी occur होगा तो program कैसे stuck होता है वो देखना है. So for that purpose, we will write one program which will perform the division. So here I will write the code, write a Java program to perform division. Okay, using scanner class. अभी थोड़ा सा ना इसमें अच्छा सा करते हैं scanner class. Done. So now for that, if you want to use a scanner class, make a note of that. अब क्या करना पड़ता है? What is the required thing? We need to import the package. Which package? So just I will use import java.util.scanner. We need to import this class. What is the reason to import this class? What is the reason behind that? See, if someone wants to accept the value from user,
Right now, I will provide the value and computer or Java language will perform the division. Okay, just I will write the code for that also. Okay, so import java.util.scanner is a predefined class which used to accept the value from user. Which is used to accept the value from user. Okay, so here I will route the class exception. Now here just I will write public method public static in that string args an array and just inside that just I will write my code. Okay, so now we need to utilize the scanner class. So for that purpose, we need to expand this feature. Scanner class के भी features मुझे expand करने पड़ेंगे. Okay, so first of all, if you want to use a scanner class, then we need to create an object of scanner class which has a relationship. See, this class is already defined by the James Gosling and Patrick. Okay, these are the author of Java language. ये already उन्होंने define किया कि how we will use. Earlier we already discussed about the class called as a compile. Sorry, we already discussed about the compile time error. In that case, in that case, just I say that I told that if a person had a poor knowledge of language, if a person had a poor knowledge of language, in that case compile time error will be generated. अब ये क्यों होता है? What is the reason behind that? Because आपको पता ही नहीं how we will use a scanner class. Okay, so first of all we'll use a scanner. Just 1 minute. Here I'm trying to use scanner. Here we'll create the object. Object name will be anything. Okay, whether it is ABC, PQR, XYZ, whatever it may be. It's equals to new. Again scanner. That's it. Now inside that, just I will write system dot. Now this is a scanner class has a relationship. Okay, we can create our own relationship also. Okay, we already did in the package call. Okay, ये package chapter में हमने पढ़ा था. Now हाँ, याद रखना है कि ठीक है आपको अगर बीट भी नहीं हुआ है तो विल कवर दैट बिट बट वंस वी कंप्लीट दिस later on we'll start with that. These are the very basic chapters. Okay, make a note of that. आपको ये अभी भी समझ में आना चाहिए. What is the reason behind that? What is the exception? What is the exception handling? Because इस तरीके से हम प्रोग्राम परफॉर्म करना. Make a note of that कि आपको ये प्रोग्राम कैसे आना. Just before handling exception handling, we need to generate the exception. अभी इसमें हम exception generate करने वाले हैं और प्रोग्राम कैसे स्टक होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, मेक अ नोट ऑफ इट. सो नाउ जस्ट हमने स्कैनर क्लास कर लिया. सो नाउ वी नीड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम यूजर. वंस वी accept the value from the user, later on we can perform the operation. Okay, first of all here we need to specify a message system dot out dot print ln in round bracket. Just I will write one message, enter one value or enter first value. This program I'm doing without a try and catch. Make a note of that. Just I will explain later how we will use a try and catch. Just before that, we need to understand how the exception will generate. So now we need to store that value. So just I will use a string a is equals to. So here we need to use object of scanner class so that read line. That's it. Okay, this is about what? This is about what? Of that need line here we need to use next line. Okay, so now we need to accept that value and that value will be stored in a that value will be stored in a बट ये ना हमें डिवीजन परफॉर्म करना है और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर हो रही है. लेटर ऑन वी नीड टू कन्वर्ट. अब इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग. लेटर ऑन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर और इसका ना बहुत ही इजी ऑप्शन है. सो किस में कन्वर्ट करना है? इंट में करना है. नेम ऑफ वेरिएबल हियर आई विल राइट num1 इज इक्वल्स टू. अब डेटा किसके अंदर है? स्ट्रिंग के अंदर है. कन्वर्ट किस में करना है? इंटीजर में. सो राइट डाउन इंटीजर dot parse sorry
parse और नेम ऑफ वेरिएबल ए। ओके, अब देखो इसमें कन्वर्जन किसमें करना है, स्ट्रिंग की वैल्यू है, डेटा विल बी स्टोर्ड इन स्ट्रिंग ए, later on we need to convert into the num1, so the best thing is convert जिसमें करना है वही लिखना है, integer dot parse it। ओके, अगर मुझे फ्लोट में करना है देन आई विल यूज फ्लोट वेयर f is capital dot parse float, अगर मुझे डबल में करना है डबल डॉट parse double। Okay, so like that we can use. Okay, so that term called as a typecasting or conversion. We can say that. So अब हमारा डेटा कन्वर्ट होके आ गया है। Now just for the curiosity, just I want to check a code whether it does whether that program had any query. Okay, so for that just मैंने लिखा भी नहीं है, but just बेसिक जो थिंग लिखा है, एरर यहाँ तक होगा तो मैं उसे सॉल्व करूंगा और आगे बढ़ूंगा। So for that purpose, just what should I do? I will use command prompt open. Where is my program stored? D drive. So I will use d colon cd, the folder name Java. Here I will use Java C and the name of program will be the, I think exception is there, exception.java. See, I successfully compiled this program. What does it mean? Till now, I don't have any compile time error. I'm talking about the compile time error. Why? Why I'm not talking about the execution runtime error? Because yet I did not executed my program. So that's why I'm not talking about the execution. So मैं execution के बारे में नहीं, compile time की ही बारे में बात कर रहा हूँ. Okay. So now let's do other thing. So once we receive one value, let's do another value. तो डिवीजन परफॉर्म करना है तो दो वैल्यू लगेंगी। So here I will use the second one. Again, I will store this information into the string. Again, it will convert it into the, what we say, integer. So for that, just I will make a copy and paste. So here we need to change the variable name as a b. Okay, एक ही अंदर दो वेरिएबल नहीं हो यूज कर सकते, and here I will use num2. Till now, see, just we had two values a and b, which data type is a string. Later on we are trying to convert it into the integer, and that variable name is a num1 and num2. Now I can perform the operation. See, here I will use system. Operation means what? We need to perform the division. System dot out dot ln and round bracket double quote that I will write addition, and I will use plus in round bracket I will use num1 mod by, sorry, division by num2. That's it, semicolon. Now I will perform the operation. Let's do that. Here I'm trying to use CLS. Now recompile the program, check out does we have any error till now? No. Now I'm trying to execute the program. See, Java C, Java compile. In that case, it will check only compile time error. That case, it will check only compile time error. Now, if you want to check the runtime errors like that stuff, then we need to execute a program. Java exception. That's it. Enter. Now enter the first value. I will write the 10. Enter the second value. I will write the 2. See, the addition क्यों लिखा है मैंने यहाँ? Division is okay. So now again I will recompile it because मैंने code change किया है. Now enter first value 10. Enter second value 2. See, the division is 5. Now the division is 5. Successfully work? Yes. यहाँ exception occur हुआ क्या मेरा? नहीं हुआ. हमारा exception occur हुआ क्या? नहीं हुआ. Now change the value. Run Java exception. First value is a 12. Second value is a 0. अब यहाँ प्रोग्राम स्टक होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको पता चलेगा। सी, स्टक हुआ मतलब ये एरर आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लाइन अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अब इसे कहते हैं सिस्टम एरर मैसेज। लाइन नंबर जो भी आया है इसे कहते हैं हम सिस्टम एरर मैसेज, दैट एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड। अभी ये रन टाइम एरर यहाँ जनरेट हुआ है,
क्योंकि इसके अंदर मैंने कहीं भी ट्राई एंड कैच लिखा ही नहीं। हाँ, मैंने ट्राई एंड कैच कहीं लिखा ही नहीं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द सिस्टम विल जनरेट अ एरर। ओके, सो यहाँ एरर जनरेट हुआ। चलो फिर से एक बार रन करते हैं, एक अलग टाइप का एरर देखते हैं। Enter the value. Here I will use pen, and here I will use 2. Now earlier I am using the numeric value, now I am using a string. अब string हुआ तो भी exception generate होगा. What is the reason? Because we are accepting the value in the form of numeric. Because जो भी हम नंबर डाल रहे हैं उसको later on हम convert कर रहे हैं किसमें? Integer में. This 2 cannot be convert into the integer, so we get the error. See, number format exception. ये जो दिख रहा है ना, नंबर और फॉर्मेट एक्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग 2, क्या कहते हैं? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. सो सच अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन विल जनरेट. ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है. नाउ वी नीड टू हैंडल सच अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन. अब ये कब होता है? जब यूजर इरेलेवेंट इनपुट अगर प्रोवाइड करता है. इफ यूजर प्रोवाइड रिलेवेंट इनपुट लाइक दैट 22 डिवाइडेड बाय 3, से वी गेट द आउटपुट. यूजर अगर वैलिड इनपुट पुट करता है, एंटर करता है, देन वी डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन. But if user enters irrelevant output, then we get the error. Now the task is we need to convert this system error into user friendly message. अब हमारा ये टास्क है. तो हम क्या करेंगे? बिफोर दैट जस्ट ट्राई एंड कैच के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और लेटर ऑन इसको ही हम ट्राई एंड कैच में परफॉर्म करके देखेंगे. सो व्हाट इज अ ट्राई? सी, अगर आपको डाउट है, एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है. फॉर एग्जांपल नंबर डिवाइडेड बाय 0 है, इनपुट है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, देन मेक अ नोट ऑफ दैट. दैट कोड मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक. That code must be placed inside the try block. Here I will write if developer or if user had problem will arise, then should write side inside the try block. याद रखना है आपको, रट्टा मारना नहीं है यहाँ. बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई वी यूज ट्राई ब्लॉक, व्हाई वी यूज अ कैच ब्लॉक. Is there any need to write in? Is there any need to write catch block? Can I able to write only try block? Can I able to write only catch block? Okay, is there a necessity to write both? Can I able to use a multiple catch block? So like that stuff will ask in the interview. So for that reason, आपको ना पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है. So what is a try block? So if user had a problem may or will arise in code, then he should write code inside the try block. याद एक ही रखना है कि अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कोड आ सकता है, एरर आ सकता है. फॉर एग्जांपल num1 डिवाइडेड बाय num2, दिस इज यूनिवर्सल. क्या है भाई? यूनिवर्सल एक्सेप्शन है. ऐसा नहीं है कि मेरा यूजर डिफाइंड है. There are two types of exception: user defined exception and predefined. Now we're discussing about the predefined exceptions only. We're not discussing about the user defined exception. ये तो यूनिवर्सल है, मुझे भी आने वाला है, आपको भी आने वाला है, XYZ को भी आने वाला है, PQR को भी आने वाला है. So that time also user defined, sorry, predefined exception, and that will be handled in the that all concept wrote in the Java language book. Okay, James Gosling and Patrick. Okay, जो भी मैं predefined बोलता हूँ ना, तो in that case everything will be created by author. predefined अगर मैं यूज करता हूँ, जैसे मैंने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा, बताया, इट इज प्रीडिफाइंड लाइक दैट. दूसरा, फॉर एग्जांपल मुझे ये टाइप कास्टिंग था, इंट ए इज इक्वल्स टू टीचर टीचर डॉट पार्स ब्रैकेट. इन दैट केस अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर मैं यूजर ने एक्स वाई जेड एंटर किया, पिक्योर एंटर किया, तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा,
So all these code will be placed inside the try block. Make a note of that. जिसमें भी doubt है. Another option है catch. कैच कभी भी ना ट्राई के बाद में आता है. इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडल करने की मेथड. ओके, सो लाइक नॉर्मल क्रिकेट में जैसे कैच होता है ना, सेम थिंग एक्सेप्शन को कैच करने के लिए कैच यूज किया जाता है. Okay, inside that we will write a class name. अगर आपको appropriate exception के class name पता है तो वो लिखो, otherwise उसकी superior class लिखो, otherwise उसकी भी superior class लिखो. Just I will explain. Okay, for example, who is the superior class of all? Then the name is object. That exception का superior class कौन सा है? Variable. आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन का टाइप कौन सा है और हार्डवेयर एक्सेप्शन का टाइप कौन सा है? हार्डवेयर का है एरर. सुपीरियर क्लास के बारे में बात कर रहा हूं मैं. एस्टरडे, अब आज मैं लेक्चर दोनों अपलोड कर दूंगा, तो एस्टरडे का लेक्चर आज कंपलसरी आप देख लेना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन के टाइप कौन से हैं? सुपर सुपर क्लास कौन सा है? हार्डवेयर में तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट हमें डील इसमें ही करना है, सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन में. ओके, इसके अंदर कौन से क्लासेस है? फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, these are the predefined classes. Okay, like that array of double. So either in that catch we can write variable, we can write error. If we had a hardware error, we can write exception, we can write arithmetic exception, we can write number format exception. ये ट्राई एंड कैच आज हम खत्म करने नहीं वाले, मेक नोट ऑफ दैट. इसे हम कल भी पढ़ेंगे. ओके, इसके अनदर फीचर्स के साथ में भी. बट याद रखना है कि इस कैच के अंदर यही होगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे ना सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन का पार्ट पता नहीं है कि कौन सा जनरेट, वेदर इट इज अरिथमेटिक और वेदर इट इज अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है ना, ये मुझे याद नहीं आ रहा है. तो व्हाट शुड आई डू? आई विल यूज दिस क्लास एक्सेप्शन. तो ये मैं इसके अंदर लिख दूंगा. दैट उसे हैंडल करने के लिए हम इसे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है. मतलब दैट इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन कॉट होने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ मैंने ई लिखा है, इंस्टेड ऑफ ई आई कैन यूज ए बी सी डी पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन वॉट एवर इट मे बी. So that will be handled in the object. So this is the exception and that will be the object. Now after that I will use curly brace open close. Okay, just I'm trying to explain the syntax. Okay, inside that just I will write system dot whatever just out dot println. अगर आपको convert करना है, inside that just press the e along with statement if you want, like don't divide. एक example, num I 0, ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा. दैट्स इट. अगर ये मुझे मैसेज नहीं देता हूँ, सी अपना टास्क क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग है. एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है? सिस्टम एरर मैसेज विल बी कन्वर्टेड इनटू यूजर फ्रेंडली मैसेज, यही होता है ना. तो अगर मैसेज आप नहीं दोगे तो फिर मीनिंग नहीं है ना. सो दैट केस वी नीड टू प्रोवाइड द मैसेज. in that case we need to provide the proper information. Okay, so in that double quote just I will write don't divide num by 0. Let's start with the code. What should I do? I will use same program. और इसमें ना थोड़े से, ठीक है चलो, we will not use the same program, we will write one by one. जैसे जैसे लगते हैं हम परफॉर्म करते चलेंगे. ओके, तो यहाँ तक तो हमें लगेगा. So I will save my program. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या करना है? हमें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या करना है? जहां एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, देयर इज अ चांसेस दैट कोड में अराइजेस प्रॉब्लम और एक्सेप्शन, दैट कोड विल बी प्लेस्ड इन द ट्राई ब्लॉक. मेक अ नोट ऑफ दैट. से हमें लिखना है ट्राई ब्लॉक में. सो फर्स्ट टास्क is here I will write try, the brace open and close. Inside that I will write a code.
अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, इसलिए मैं यूजर से जो वैल्यू ले रहा हूँ ना, दैट विल बी आल्सो प्लेस इनसाइड दिस कोड। आफ्टर दैट जो डिवीजन का लॉजिक है ना, वो भी हमें यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट शुड आई डू, आई विल कॉपी द कोड टिल, पूरा कोड हम कॉपी करने के लिए मैंने पूरा कोड पहले कॉपी नहीं किया था। जिसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, दैट कोड मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द try block. Make a note of that. And at the end of try block, it is mandatory to enter the catch. Okay. So here I will write catch in round bracket. अब exception का type मुझे पता नहीं. Later on we'll do the different kind of program. Okay. So what should I do? I will use a superior class of software. Okay. So here I will use exception. इसका ऑब्जेक्ट ई ना। अब एक ही बारे में सोचो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ही, और वी कैन से दैट डिवीजन का ही एरर आने वाला है, डिवीजन का ही एरर आने वाला है, बिकॉज कैच का एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास। और टुमारो हम देखेंगे कि हम कैन वी यूज मल्टीपल कैच स्टेटमेंट, कैन वी यूज अनदर थिंग लाइक दैट। ओके, एंड हियर आई विल राइट मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट and divide 1 by 0. I wrote this message. Okay, so you can write your own message. मैंने जैसे ऐसा लिख दिया, plus object e, that's it, हो गया मेरा। सी अर्लियर प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, ये मैं दोनों बताऊंगा आपको। ओके, कैसे एक्सेप्शन यहाँ हैंडल हो रहा है और पहले में कैसे हैंडल नहीं हुआ था। ये एक्सेप्शन तो ऑकर हुआ है 100%, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक्सेप्शन ऑकर तो हुआ है, हैंडल नहीं हुआ है। अब इन दैट केस वी नीड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। ओके, सो ये ट्राई होगा, ये कैच होगा, एज्यूम दैट हमें नंबर डिवाइडेड बाय 0 ही लिखना है। ओके, मतलब एक्सेप्शन जनरेट करवाना है। यहाँ नंबर फॉर्मेट का एक्सेप्शन अगर मैंने जनरेट करवा दिया ना, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मैसेज गलत हो जाएगा उसके लिए। इसलिए हम कल देखेंगे कि मल्टीपल कैच कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लाइक दैट। सो वंस दिस कैच स्टेटमेंट विल बी क्लोज, कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। इसके बाहर मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा ट्राई एंड कैच के बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये क्यों आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। प्रिंट एल, here I will write I am out from try and catch block, and क्लास बॉक्स से बाहर हूं। अब डिफरेंस समझिए, अर्लियर आई यूज एक्सेप्शन, यहाँ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होगा, या वी कैन से दैट नंबर डिवाइडेड बाय 0 का एक्सेप्शन होगा। So in that case, that exception is generated, but it is not handled. That means program वही stuck हो गया, लाइन नंबर 13 पे ही प्रोग्राम क्लोज हो गया है। चलो प्रोग्राम देखते हैं, लाइन नंबर 13 कहाँ है, इन दैट केस। ओके, यहाँ प्रोग्राम लाइन नंबर 13 पे ही स्टक हो गया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन था तो लाइन नंबर 30 पे स्टक हो गया। आगे का एग्जीक्यूट हुआ क्या, आगे की लाइन एग्जीक्यूट हुई क्या, नहीं हुई। दैट मीन्स एक्सेप्शन इज जनरेटेड बट इट इज नॉट हैंडल्ड। अब इन दैट केस अगर यहाँ एक्सेप्शन जनरेटेड होता है, स्टिल रेस्ट ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। स्टिल जितना एक्सेप्शन का पार्ट है वो छोड़ के रेस्ट ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स अगर ये एक्सेप्शन हैंडल होता है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ओके, अगर एक्सेप्शन आने के बाद हैंडल होता है, सो लेट्स डू दैट, आपको पता चलेगा। जावा सी, let's do that, compile now or execute Java exception values. Here I will use a 20 and just I will use a 0. First of just I will use a 2. अब एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है नहीं, what will be the output,
the division is 10 and I am out of the try, मतलब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है. अब एक्सेशन जनरेटर करके देखते हैं. फर्स्ट वैल्यू 10, सेकेंड वैल्यू 0. सी, मैंने जो मैसेज लिखा था ना, can't divide num1 by 0, मेरा मैसेज है. The system error message will be generated. और important thing, लास्ट में चेक करो, I am out of try and catch block, that means exception is successfully handled. अब ये ना पढ़ाने की मेथड्स अलग होते हैं. लोग इसे कहते हैं कि जस्ट मैंने जस्ट आई रोट अ लाइन एंड आई हैंडल द एक्सेप्शन. ऐसा नहीं होता है. जस्ट आई रोट दिस लाइन एंड आई हैंडल द एक्सेप्शन. वी नीड टू एग्जीक्यूट सर्टन कोड, उसके बाद का भी कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ही उसे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करूँ. Okay, so this is about the today's lecture. So till now, if you had any query, let me know. We'll close the session. So before that, just I will stop the recording.